let us start with the same topic of cash budgeting. We'll be seeing the next question of the cash budget, which we have seen in previous session. So today we are going to deal with question number 8. Okay. I hope you must have understood how the cash budget needs to be prepared. We'll keep the cash budget column blank. We'll prepare all the working first, which is required. And then once we'll get the detail, we will put it up in the cash budget column, and we'll start with the opening balance of cash. We'll get the closing balance of cash for that month. That will be opening for the subsequent month. And likewise, we will do the working and completion of cash budget for a specific period, which is given in the question. So from the information set out below, prepare a monthly cash budget for the period January to June 2010 for A Limited. Price and cost are assumed to be unchanged during the year. This is what they wanted to make the things, and that's why I told you, whenever you are also doing any assumption, to be put on the beginning of the solution. So whenever you are writing answer, before that only you put all the assumptions which you have kept it for your question. Many a time student write as a note, which is wrong. Credit sales affected are 75% of the total sales. Yeah, this is one adjustment, which is very important. The company's collections for the credit is as follows: 60% 1 month after the sale, 30% second month after the sale, 5% third month after the sale. Yaad rakh. Sale forecast is given from October to July. Company maintains a gross profit of 20%, so this is given. The probable sales of each month and purchase are settled in preceding month. So purchases is settled after a month, where sales ke liye, debtors are settled like this. Creditors are like this. Very important information. Salary and wages are paid as follows. So diya hua hai, January to June diya hua hai. Given. So no working is required. So we had in previous question working for wages. Aisa, abhi wahan working, and every expenses were 1 month lag. So we did the working. But here in this question, those workings are not required. Interest on 12% convertible debenture is due on 31st March and 30th June. So 2-month outflow will come. March and June. Yaad rakhna. Company has to pay 1 lakh of tax. Okay, due to dispute, is decided 20% of disputed amount to be paid on April. So again outflow. So outflow के जितने भी adjustment है वो याद रखना, and accordingly you should give, as we did during previous question also. The company intends to import a machine at a capital cost of rupees 8,000, which along with the import duty of 50% to be payable in June, again outflow. So these are the adjustments regarding outflow. The subsequent month which is given in the question, we will put these outflow in our cash budget. The company has cash balance of 40,000. Very important information. From here we'll start our answer. Annual rent of 9,600 paid monthly. So 9,600 is yearly. So monthly कितना हो जाएगा? Tell me, how much you will get monthly? 9,600 divided by 12.
800 month you rent you have to take it. Okay. Any doubt with this adjustment to anyone? No, sir. Okay. So now with this question, we will start solving their answer. So go as we did for previous question. Similarly, here also we'll go. First, we'll make this cash budget and we'll keep, or if you use left hand side page or right hand side page. So in left hand side page, you keep it blank. Only write the cash budget from 1st Jan to June, Jan, Feb, March, April. Put the particular column and keep it blank. We'll see the working note. Their cash budget is by and large 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 to 16 lines. Do it. Let us start with the working. They have given the total sales from October to July. Take down. I've taken from here. 1,20,000, 1,40,000, 1,60,000. Yes or no? As it is, I wrote. Okay, dear student. Out of that, they are saying 75% is credit sales. So how much is cash sales then? Please be quick, yaar. 75% credit है, तो cash कितना होगा? 25%. 25. Very simple. तो इसका सबका 25% निकाल दिया मैंने. Till June, जुलाई मेरे लिए उतना important नहीं था. ठीक है? And from Jan to June तो बहुत important था, इसके लिए उसको डार्क कर लिया. आप चाहिए तो बॉक्स बना लो आपके नोटबुक में, चलेगा.
till here you have completed? लिख लिया तो फटाफट बताओ, then we'll proceed further. So tomorrow also we'll meet and I'll try to finish this budgeting wala part. Now there is a purchase budget and this and that. That's very common. Nothing much complicated as these cash budget or flexible budget. So that we will finish it off and then we will proceed for next topic, which is service costing. Very important and very interesting. Sir, Yes, I have a question. please. ये हमारा जो मेन एग्जाम है वो हाँ। ऑनलाइन होने वाला है, सब्जेक्टिव टाइप. सो Last आपका year भी सब्जेक्ट कैसे होएगा? last year भी हमने सब्जेक्टिव लिया है. You हाँ. can ask. तो ओके. आपके लिए आपको लग रहा है ऑनलाइन सब्जेक्टिव नया चीज है. हमने ऑलरेडी इसको एक्सपेरिमेंट किया हुआ है in both the semester of last year. So how was it done? How can we find that out? We have given the question will be there in the library or you can ask them. We'll put you the question like this. Okay, we have the Okay, so the software. table will be available. Yes, question will be there and you have to upload this answer Okay. Okay, sir. and we will evaluate accordingly. We evaluated last year also. 15 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे हमने. Out of 60. Okay, thank you. Okay. So if it is cash then credit 75% आ जाएगा by default. माइनस करोगे तो आ जाएगा ना क्रेडिट. जैसे यहाँ 90 आएगा, 1,05,000 आएगा, यहाँ 120 आएगा. Yes or no? Yes, sir. आ गया तारा credit sales. Why we need credit sales? To get the collection from debtors. अभी 60% के लिए क्या बोला उन्होंने? Then we'll apply this 1 month, 30% second month, 5% third month. ऐसा लिखते जाएंगे. तो इसका 60% कितना आएगा? 90 का 60 बोलो क्विकली. 90,000 का 60% कितना आएगा? 54. 54,000. Okay, so 54,000 will be here. 30% कितना आएगा? 27. अरे बहुत सिंपल है यार. 9 3 जा. Very sad. 90,000 का 30% आपको इतना टाइम लगता है. It will be 27,000. And 5% 4,500. वैसे 1,05,000 का करो. 60% will be how much? Quickly. 63. 63,500. 30 will be how much? 27. 31,500. 90 का भी 27 and 1,05,000 का भी 27 आएगा. हाँ, 31,500. 5% 5% तो कैलकुलेट कर सकते हो भाई. 10 का आधा.
10% कितना आएगा 10,500, 5% कितना आएगा 5,250. Same way we will do it for 1,20,000. These workings are very important. 60% कितना आएगा 72,000. very good. 30%, 12 3 जा 36, 5%, 6,000. Same way we will do it for 45,000. 60%, 27, 30%, 13,500, 5%, 2,250. Same way we will do for 60,000. 36, 30%, 18, 5%, 3,000. Next month also it was 60, so it will repeat. 36, 18, 3, 90 का also 54, 27. आगे मुझे जरूरत नहीं है इसके लिए we will not write. 60 का 95 का 45,000. So these collections are not important. इसमें से total what we will be going to get for Jan to June will be important. Completed. So this we got Yes, cascade. sir. This we got collection from data. अभी आप बोलोगे सर 95% ही हुआ 5% क्या हुआ हमने बैड डेट माना रहेगा नहीं लिया हमने चलता है क्वेश्चन में जितना दिया हम उतना ही ले सकते हैं ना और ये सब प्रोजेक्शन है हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं है ना बजटिंग कर रहे हैं दैट इज ऑलवेज अप्रोक्सीमेटली वैल्यू एक्चुअल नहीं होता ठीक है नेक्स्ट दिस डिटेल इज गिवन फॉर जीपी अगर ग्रॉस प्रॉफिट निकाल दोगे तो कॉस्ट आ जाएगा सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट निकाल दोगे तो कॉस्ट आ जाएगा ना परचेज का कॉस्ट so that is why I have taken purchase is 80% of sales nothing is given for purchase only दिया हुआ है कि payment is preceding month preceding मतलब एक महीने पहले देखो परचेज का भी एडजस्टमेंट बहुत खतरनाक है इसमें तो 80% ऑफ एवरी वैल्यू 1,20,000 1,40,000 सबका 80% ले लो कहां तक लोगे जुलाई तक इसके लिए जुलाई का डिटेल दिया हुआ है इसमें ठीक है बोलते हैं परचेज तो कैसे सेटल करना पड़ता है बोलता है प्रीसीडिंग एक महीने पहले आपको सेटल करना पड़ेगा सर हम एक महीने पहले करेंगे इसका सेटलमेंट यहाँ आएगा ठीक है इसका सेटलमेंट यहाँ आएगा इसका सेटलमेंट यहाँ आएगा इसका सेटलमेंट यहाँ आएगा सबका एक एक महीने पहले सेटलमेंट आएगा ठीक है तो फैब का सेटलमेंट जैन में आएगा जैन में मेरे को कितना पेमेंट करना है 64,000 दिया हुआ है ना सेटलमेंट शुड बी परचेज एंड सेटल इन द प्रीसीडिंग मंथ ठीक है so this will come here March will come here April will come here May will come here एक महीने पहले June will come here and July will come in June ये समझा परचेज वाला एडजस्टमेंट Yes, sir.
एक एक मैंने प्रीसीडिंग लिया है पहले, याद करो, टैक्सेशन को याद आएगा प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर क्या है पहला, ठीक है। ओनली दीज टू वर्किंग्स वर रिक्वायर्ड और कोई वर्किंग नोट नहीं है। चलो देन विल गो फॉर कैश बजट। ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 40,000। दिस टू वर्किंग यू डिड, लिख लिया ये दो वर्किंग नंबर 1 एंड 2 आप लोगों ने। वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ, बुक्स में बहुत टाइम नहीं दिया ये सारे वर्किंग, द वे आई एम एक्सप्लेनिंग टू यू। So cash sales given, we got it from working note, and collection from debtors also we got it from working note number 1. So write that for all 6 months. Clear है? ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 40,000। पेमेंट, पेमेंट टू creditors also we got it from working note. So write all the payment. इसके अलावा सैलरी एंड वेजेस गिवन, मंथली दिया 12, 16, 20, 20, 16, 14. So write salary and wages for all 6 months. Interest is also given. What is given interest? Will be on 31st March and 30th June. Only in 2 months there will be interest. That will be in month of March and in the month of import of land. In the month of June. So nowhere it will be expenditure other than June. Only expenditure will incurred in June. Rent payable, I told you, we have calculated it will be all the months irrespective with the amount of 800. And tax payable is in the month of April. So we got the inflows, we got the outflows. हम लोग क्या करेंगे, टोटल करेंगे। ये तीनों का टोटल कितना है? 163। देखो मुझे यहाँ आ रहा है, ये तीनों का टोटल कितना है? 76,800। माइनस करेंगे, ये माइनस बी विल बी द क्लोजिंग।
करो. $163 minus 76,800. 86,200 would be closing balance of January, which will be opening balance for Feb. Yes or no? Are you getting, dear student? Yes, sir. Again, I will take the total of Feb, which comes 1,74,450. One lakh 74,450. And this was total inflow. Outflow is 80,800. A minus B. How much you are getting? How much you are getting? 174,450. 93,650. Yes. Again, this will be opening of March. Again, I'll take the total, which is 169,150. Total of outflow 119,800. 169 plus 119. $49,350. Are you getting? That will be opening for April. And take the total is 135,600. And outflow 120,800. So what is the balance? 14,000 something, no? 14,800. Will be opening 1,14,800. 80,800. Closing is 34,000. 79,000. 1,41,800. So this time it will be negative in the month of June. 12,000. This is how you can make the cash budget. Clear? Hai? If you have completed, then we may proceed to the next question.
Completed? All of you? Sir, no, sir. Just give me 5 minutes. Yeah. Okay, beta. These are the complex budgeting. बाकी तो नॉर्मल फंडा से आ जाएगा. सर असाइनमेंट कैसे रहेंगे? असाइनमेंट ये क्वेश्चन है ना जो मैं नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, वो सारे क्वेश्चन आपके लिए असाइनमेंट है. ओके ओके ओके. वो कभी तक सबमिट करना? मैं तो देखते ही जा रहा हूँ. मार्जिनल कॉस्टिंग का मैंने सारे असाइनमेंट चेक कर लिए ऑनलाइन. मैनेजरियल डिसीजन का एक बार मैंने ऑलरेडी चेक किया हुआ है. मैं ऑनलाइन में बच्चों का चेक कर रहा हूँ. पूछो उनसे those who have given their assignment. तो अलग से असाइनमेंट अभी मैं असाइनमेंट देख रहा हूँ, सिर्फ वाइवा नहीं किया हूँ, वो मैं ऑल टुगेदर दे दूंगा. ओके. बट सर जिसका चेक नहीं हुआ है वो लोग का क्या? तभी दिखाएंगे, तभी देखा जाएगा. उनको उतने मार्क्स तो नहीं मिलेंगे जितने बच्चों के पहले मिले. उनको डेफिनेटली कम मार्क्स मिलेंगे. एक्चुअली तो मैं जॉब करती हूँ, तो मुझे कभी कभी बहुत घर पे सारे आते आते बच्चे लेट हो जॉब जाते. बहुत सारे बच्चे जॉब कर रहे हैं. लेकिन अगर आप ड्यू टाइम, बिकॉज कॉल्ड कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन, नो, तो कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन के लिए आपकी कंटिन्यूटी जरूरी है ना. सी नाम दिया गया है
और जो आपका सेमेस्टर एंड एग्जाम है उसको ऐसे ही नाम दिया गया है. So continuity is must. You are getting the degree of regular MCOM. It's not distance learning. At least in exam तो आपको Okay. आना चाहिए. हमने ऑनलाइन पूछा है. हम थोड़ी बोलते हैं आप ऑफिस से भी अटेंड कर सकते हो. वही सर, सर लेकिन- अटेंड लेक्चर कर रहे हैं लेकिन वो है ना बुक कंप्लीट करने के लिए टाइम नहीं मिल रहा है. टाइम Like निकालो. only टाइम time on निकालो. Sunday. वही सर संडे को कितने मिलता है संडे लेकिन अब निकल तक है ना गए? फुल. कितने संडे Sorry, निकल sir? गए? मैंने जब से लेक्चर चालू किया है उसके कितने संडे निकल गए? अच्छा, जो सर न्यू लेकिन स्टूडेंट है उनका क्या? सब अपना असाइनमेंट कंप्लीट करो ना यार. मैंने बुक दे रखी है. बुक में सारे सॉल्यूशंस है. क्या नहीं समझ में आता है आस्क मी. मैंने कोई रॉकेट Okay, sir, okay. पूछा है. ओके सर. ये सारे चैप्टर आपने ग्रेजुएशन में पढ़े हुए हैं. ओके सर. मार्जिनल वगैरह पहली बार पढ़ रहे हो क्या? पिछले साल भी पढ़ा है तुमने. ओके सर. ओके. चलो, see you tomorrow evening and tomorrow we'll try to complete this topic budgeting. थोड़ा थोड़ा रह गया regarding purchase budget and all that we will take it up tomorrow. जैसे यही क्वेश्चन बीच में 7th वाला छूट गया, वो परचेज था. ठीक है, उस हिसाब से हम लोग परचेज बजट बना लेंगे.